Students, we are on the last component of future tense, that is future perfect continuous tense. Student, this tense is used to describe an ongoing action that will complete in future. It is used to express the ongoing nature of an action with regards to its continuation towards a point in future. The action is assumed to be continued for a time or specified or unspecified in future. A time reference is used in sentence to show the starting time of the action and for how long the action continue. Student, perfect continuous जितने भी tenses हैं वो चाहे present perfect continuous है, past perfect है, future perfect continuous है, इसमें हमेशा time reference जरूर होगा. तो time reference के लिए हमने कहा था since और for यूज करेंगे. Since हम particular time के लिए यूज करेंगे और for हम unspecified time के लिए यूज करेंगे. जब time specify होगा यानी कि specific time 9 o'clock, 3 o'clock, Friday, Monday, evening, morning, ये specific times हैं. लेकिन जब अनस्पेसिफाइड सिर्फ अमाउंट दी जाएगी 2 hours, 5 hours, 2 months, 2 weeks, 1 week, 2 days, हमें नहीं पता किन 2 दिनों की बात हो रही है, हमें नहीं पता किन 2 घंटों की बात हो रही है, किन ईयर्स की बात हो रही है, तो तब हम फॉर लगाएंगे. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो एक ऐसे एक्शन के लिए बात कर रहा है जो फ्यूचर में कंप्लीट होगा. अब वो फ्यूचर में कंप्लीट होगा और उसकी नेचर जो है वो ऑनगोइंग नेचर एक्शन है. मीन्स के वो कॉन्टिन्यूस एक्शन है लेकिन वो कंप्लीशन की तरफ भी जाएगा. एक्शन के उसके लिए स्पीकर ये अज्यूम करेगा कि ये एक्शन जो है कॉन्टिन्यूड भी है और कंप्लीट भी है फ्यूचर में. स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में मेन वर्ब जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस है तो ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगी यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लाइक गोइंग, लिविंग, वर्किंग, ईटिंग, स्लीपिंग एक्सेट्रा. ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हमारे पास यहाँ पे विल, हैव, बीन यूज होगा. पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि ing फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रेफरेंस. एग्जाम्पल्स देखें तो they will have been living in Paris for 5 years. The kids will have been sleeping since 10 p.m. He will have been working as an engineer in this factory since January. You will have been using my computer for 5 months. They will have been discussing about the issue for 5 days. If we talk about the negative sentences को बनाने के लिए students subject के साथ will not have been, present participle, and then we have object and then we have time reference. For example, he will not have been working in the factory for 6 months. She will not have been playing games since November. He will not have been using this car since March. He will not have been running his business since April. So students, if we talk about interrogative sentences को बनाने के लिए हम स्ट्रक्चर को कुछ यूं फॉलो करेंगे. will स्टार्ट में आ जाएगा, will के साथ सब्जेक्ट, देन उसके बाद have been, then we have present participle and then we have object. present participle students means ing form of the verb. इस सेंटेंस को फॉलो करते हैं एग्जांपल्स में students, will she have been studying in the new college since December? Will they have been working in this factory since June? Will the kids have been making a noise for 3 hours? Will they have been using their phone since tomorrow? So student, all these examples are following the structure given above. I hope student you understand the future tense. My name is Hamza. I am your English instructor from tutoria.pk. I hope you understand the concept of tenses thoroughly. See you in the next video.